lecture. I am very disappointed that no student came. I was waiting. Shiraz sahab, can you hear me? Yes sir, I can hear you. तो इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने? कहाँ रह गए थे? अच्छा, so we will start with the today's lecture. सर सर मैं 1 बजे पूरे आ गया. कहाँ आए 1 बजे? 1 बजे के कम से कम 2 मिनट बाद आए आप. सर अभी 1:02 हुए हैं. हाँ, तो मैं उस वक्त से पुकार रहा हूँ. अब आपकी आवाज आई और बाकी सारे बंदे कोई है ही नहीं. चलो खैर. Well, I will start the lecture at exactly before 1 o'clock. So I will end the lecture exactly 14:15. Alright, so we were actually studying, we had given the proof of this thing, and I was actually trying to show you that y0 mod square and y1 mod square, they will be exponentially distributed because they are mod square, and their means will be as follows. So for this I went into the last lecture, and first of all I showed you that if someone asks you what is the probability distribution function of only mod, not mod square, then it will come out to be a Rayleigh distribution. All right. So in that case, this will be the answer. Because a square plus n naught over 2 was the variance of the x and y. So it comes out to be 2 sigma square, that is why that 2 cancels, and it comes out to be a square plus n naught. And below you will have sigma square, which will be a square plus n naught over 2. This you can prove, and I've already told you to prove this, and I've also given here in my notes with respect to variance of being equal to a square plus n naught over 2. Alright. Second thing was to find the mean of this mod. So I told you how you can find the mean and how can you turn around your integration around the Gaussian random variable. So the mean comes out to be this thing. The third thing will be how you will find the distribution of mod square. Alright. In that case, your first function will not be under root, it will be x square plus y square. The roots will be the previous, but only instead of u, you will have u under root, because previously u was under root. That is why this will become under root. Again, you will find the Jacobian. Again, you will write the joint distribution, and you will get the joint distribution as follows. Then, integrate with respect to phi. This 2 pi will go away because phase is uniform. We already know phase is uniform. And you will get this distribution, which will be actually the exponential distribution. Then for this exponential distribution, you have to find the mean. Now, how can you find the mean? Same rule will apply. The random variable multiply by its PDF. Then you can just apply integration by parts. So u into this thing, minus minus, it is positive. You can also write this as derivative of this thing. You don't, it is not necessary you do this thing. You can also do it the other way. For example, you just say this is u and this is the second term. Then u as it is first integral minus u derivative first integral. All right, or you can do this way. Whatever the result, you will get this thing. Same thing, this and its integral 1 over this. That 1 over this will come here. And now you put the limits, so you will get the mean. So mean will be a square plus n naught. This is what I was trying to show here, that this and this will have mean of a square plus n naught. By y1, remember what was y1? Y1 was just noise. It was just having a Gaussian random variable variance of n naught. Its mean will come out to be n naught, and you can do this also as I have shown you for a square plus n naught. हाँ जी शिराज साहब, समझ आ गया आपको? अब तो दूसरे बंदे भी अब आए हैं माशाल्लाह.
यस अच्छा सर। नहीं कर सर इतनी जल्दी आपने गो थ्रू करवा दिया। तो आप काफी आते ही नहीं थे, मैं तो कब से सर बैठा मैं हूँ, वो बेचारे 2 मिनट लेट आए, आप तो मैं कहता सर 6 मिनट लेट आए सर। 1:02 के 3 मिनट हुए थे। 2 पे तो आप वो दूसरे बंदे आए आपके, आप पहले बंदे, आप तो उससे भी लेट आए। मैं तो काफी देर से पुकार रहा हूँ जी, कहाँ गई क्लास, कहाँ, कोई बंदा ही नहीं था। सर मैं 3 मिनट दरअसल ना वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब रिजोल्व हो गया। तो Alright. So देखिए ना, ये actually I am escaping all of this because I have already told you all of these steps in when we were doing the last chapter. So I am sharing you my notes here. You have to go through the Jacobian methods to find their distributions and their means. सर एक क्वेश्चन है। Now, अच्छा, सर ये हम yes. कर लेंगे, ये कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। सर जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 था जिसमें रेली मेथड की एक जो आपने बुक रिकमेंड की थी जॉन जी ब्रोकर, उससे करनी थी डेरिवेशन, और आपने कहा था एक जो मॉडुलस है उसका भी करना है, तो ये उसके से रिलेटेड नोट्स है जिसमें हम मॉडुलस ऑफ वाई ऑफ हाँ, ये फाइंड। उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप, मगर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, मगर आप उससे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने कहा था कि आप पहले रेली निकालेंगे। I told you that you have to find Rayleigh and then you have to find exponential. यस सर। And here I have done the same thing. Exponential and Rayleigh has been found. But here, you know, the variances are different. सर इन नोट्स को यूज करते हुए वो डेरिवेशन हो सकती है? Everything is given. It is your wish, whatever you want to do. You can do yourself or you can use a book. The book is more of a standard time. My notes, you know, I have just did the calculation based on the required material. The book has done for a standard case. All right. Next thing is to find the probability of error. Now we have found the likelihood ratio. All right. What will be the probability of error? That's a very good question. The probability of error will be that I detect that, for example, XA is there, but actually XA was not there. You could see if my likelihood ratio is greater than 1, then it means XA was sent. So if it is to be greater than 1, then you know Y0 square must be greater than Y1 square. All right. Given that XA was transmitted and I detect the right thing, then Y0 must be greater than Y1. But what will happen if the inverse is true? I am sending, you know, XA, but Y1 is greater than Y0. Then this means opposite will happen. I will be detecting XB and hence I will be in error. Now how to do these error calculations? So that I will be telling you today. So first of all, we know that we have the exponential distribution of these mod squares. Their means are as follows, and I have just told you. Now how can I find the probability of error? Probability of error will be that y1 is greater than y0. Opposite thing is happening. XA was sent, but y1 is greater than y0. Actually y0 minus y1 is positive, but if y1 is greater, then it will be negative, and hence you will be detecting xb. So y1 is greater than y0, greater than b. So what I do, how can I find the probability of this huge term? Again, I will apply the techniques from my stochastic processes or the last course that we have studied. What I say, all right, give this name x, give this name y, or you know minus y if I include this with y, and give the sum of these two random variables as x. So x will come out to be, you can say either x plus y or you can say x minus. I have used x minus y. Both are true. So z is equal to x minus y. This is my combined random variable of these two random variables. So you ये वैसे know, कैसे पॉसिबल है कि हम भेज एक चीज रहे हैं लेकिन दूसरी चीज आ जाए? तो ये आपने कम्युनिकेशन कुछ पढ़ी नहीं, ऐसी तो होता है, एरर कैसे आएगा? सर मतलब मैंने एक्स से सेंड ट्रांसमिट किया, लेकिन मुझे एक्स भी कैसे मिल सकता है जबकि मैंने इफ ट्रांसमिट? तो ये ऐसे ही तो कम्युनिकेशन में आपको गलत चीज मिल रही है, तो ऐसे ही तो होता है। नो सर, मतलब किसी और ट्रांसमीटर के थ्रू वो सिग्नल रिसीव हो रहा है? नहीं नहीं, उसी की तरफ भेजा आपका जो भी था। आपने जब डिटेक्शन की, डिटेक्शन में y1 ग्रेटर देन y0 आ गया, तो जाहिर है उसने तो फैसला करना है मैथमेटिक्स के ऊपर ना, जो उसको मिल रही है। उसको क्या पता x से भेजा था, x भी भेजा था। अगर y1 ग्रेटर आएगा तो वो xb को फैसला करेगा वो। सर मतलब मैंने अगर ट्रांसमिट ही एक्स से किया तो रिसीवर पे एक्स ही मिलना चाहिए, ये तो क्यों मिलेगा भाई? थोड़ा सा कम्युनिकेशन समझे तो। यू हैव नॉइज, यस सर, मे नॉइज बी द नॉइज में नॉइज आ इज सकता है ग्रेटर। एसबी।
maybe there is some interference. We are not discussing all those things. We are just saying how you'll find the probability of error. The probability of error is based whether your y1 is greater or y0 is greater. If y1 is greater, which is the energy for xb, this means the receiver will say xb. All right. So remember, we are basing our design on pure, maximum likelihood or optimal detector or maximum or the mathematical formula or the mathematical formulations we have. Okay. If those formulations give us an error, then we will detect an error. All right. So y1 minus y0 is if this is greater than 0, provided xa is sent, this means we are definitely in error. So how to solve this probability? I just took it here. This becomes y1 minus y0 greater than 0. Either I find probability of y1 greater than y2, or I can find y1 minus y0 greater than 0. So again, I will get the probability of error provided xa was sent. So how can I find the probability of this long term? I say, all right, say this is x random variable, say this is minus y random variable. So I make a new random variable z, which is equal to x minus y. So I have to find the probability distribution of this z, which I do not know at present. So there are many ways. The other way is the use of the dummy variable. What you do that, you say, all right, I have one random variable z is equal to x minus y, but I make another dummy random variable, which is w is equal to x. All right. So I use these two random variables and find their joint distribution by finding their Jacobian. Before the Jacobian, we have to find the root. So root of this will be just x is equal to w, and the root of this you have to find y in terms of this. This will be y going here, x minus z, and x is w. So y will come out to be w minus z. So we have found those two roots. Again, we find first of all we find the Jacobian. After all that, we will be seeing that we will be finally able to find fz. Once fz is found, we have found the distribution of fz. We just have to integrate this from greater than 0. From 0 up till infinity, I will get my error probability. Let us first of all find the Jacobian. So Jacobian will be, we have two functions zw with respect to x. So derivative of z with x will give me 1. Derivative of z with y will give me minus 1. Derivative of w with x will give me 1. Derivative of w with z will give me 0. And the Jacobian, if I calculate, will come out to be plus 1. So we'll put all of this. सर ये चेंज करने की जरूरत थी हमें भला? ये वेरिएबल आपने जो चेंज किया w को x के इक्वल पुट किया है, इसकी जरूरत थी? मेरा ख्याल से तो बहुत थी. इसके बगैर अगर आपको आता कोई तरीका तो आप निकाल लें. ठीक है. सर इसका तो हमने किया हुआ ना जो स्टोकास्टिक प्रोसेसेस में, इसकी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन आती होती है वो फार्मूला उसका, जब दो रैंडम वेरिएबल्स माइनस हो रहे हैं. मगर ये ख्याल रखिए कि ये एक्सपोनेंशियल है. सर ये नहीं मैटर करता कि बहरहाल आपको मैथमेटिक्स से शो करना पड़ेगा कि इनकी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी. ठीक है. आप निकाल सकते हैं तो आप निकाल के दिखा दें. अगर आपने एग्जाम में करना है तो आपको ज़ाहिर है इसको मैथमेटिक्स के साथ करना पड़ेगा, वो प्रूफ से नहीं चलेगा. सर एक क्वेश्चन है, ये जो z माइनस पहले उनका शिराज साहब से पूछ. शिराज साहब समझ आ गया आपको? ये सब ठीक है. हम उस तरीके से करके मैं देखूंगा कि उससे भी मेरे ख्याल में सेम आंसर आएगा. आप बिल्कुल कर सकते हैं. वो तो ये तो मैं तो अपना डमी वेरिएबल वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, कि ज़्यादा हम यूज करते हैं. अगर आपके पास कोई और मेथड है मगर उसकी प्योर प्रॉपर मैथमेटिक्स हो, इन्हीं दो डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें, आप ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें और फिर उसके बाद आप सर वो गिवन है उसके अंदर, पॉपुलस की बुक में है. ठीक है. ठीक है, आप देख लीजिएगा. अब अगर आपको पूरी मैथमेटिक्स करके दिखाना होगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है. अब सलीम साहब आप. हाँ जी ठीक है. हाँ जी सलीम साहब. जी सर, ये z माइनस एक्स नहीं होगा ऊपर पेज पे सर? क्या कैसे होगा? लगे मतलब मैंने z इज इक्वल टू x माइनस वाई यूज किया है ना, तो y यहाँ चला गया, z यहाँ आएगा तो x माइनस z होगा ना. फिर x w के बराबर है तो w माइनस z होगा. अच्छा ठीक है. और सर ये w करना लाजमी है अगर हम x की बेस पे ही कर लें? आपने जिस तरह मर्जी करना. मैंने जो मेथड यूज किया वो डमी वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल होता है. यानी आपने जानबूझ के एक डमी इक्वेशन है उसका डमी वेरिएबल यूज किया, बाद में उसको आप उड़ा देते हैं. कोई और मेथड है जैसे शिराज साहब कह रहे हैं, यू कैन यूज दैट मेथड. ठीक है. ओके सर. सर ये अच्छा चलें ठीक है सर. ओके. So the joint distribution will be
the joint distribution of x, y with the relevant roots divided by the Jacobian. This comes here. So the roots are w and w minus z. So I know they are independent, though both exponential distributions are independent. So I can write this as fx w. This will be fy w minus z. Then you know x is y1 and fy is y0. So I write the distribution of y1. So y1 is you know y1 has n naught mean. This will be 1 over n naught e minus w over n naught, and this is just rough, so do not consider this thing. And f of y0 has a mean of a square plus n naught. This will be 1 over a square plus n naught e minus w minus z a square plus n naught. But remember that these two distributions, they were exponential because they were starting from 0, all right, and they were going up to infinity. So this one will start from w0, but this will start from w minus z. This means this will start from z. So one is starting from 0 and the other is starting from z. All right. Now, how can I find fz? If I want to find fz, the method is that you take its integration and you integrate this joint distribution by w, so that you finally get fz. So I will take this joint distribution and I will integrate this with dw. But in integrating, I will make sure that I will integrate from z to infinity, because their product will exist from z, not from 0, because from 0 to z, this second function is 0. So I will integrate from z to infinity this joint distribution. From z to infinity, this joint distribution. Exponential curves नहीं And what are आएंगे you सर? saying? सर दो exponentials हैं. जी, तो सर स्टेप फंक्शंस की बेस पे हम अंडरस्टैंड करें तो एक्सपोनेंशियल कर्व्स नहीं आएंगी? एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ना वो स्टेप्स होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके सर. यानी वो मैंने लिखा वहाँ पे इसके साथ UW है और इसके साथ UW माइनस Z है. मतलब मैं चाह रहा था कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल नहीं आएंगे जो आप एक्सिस में स्टेप फंक्शंस करें राइट साइड पे, जो फिगर्स लिखी हैं आपने बिल्कुल राइट साइड पे. हाँ, वो मैंने सिर्फ यूनिट्स बनाए ना दिखाने के लिए कि ताकि हम लिमिट्स निकाल सकें. सर वैसे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग जा रही है. हाँ, ऐसे इधर भी बना होगा, इधर भी एक बना होगा एक्सपोनेंशियल डिके, दोनों जगह ये वाला बना होगा. मैं सिर्फ उनके स्टेप्स को शो किया. ओके सर. So क्या कह रहा था? Yes, so we have two exponentials, ठीक है, and I add these their their powers are added, so this comes out to be like this. After taking the LCM will be a square plus n naught into n naught, and after LCM you will get these two terms. So these two terms are still there. Now what can I do? I take its integration. So integration will be this term divided by minus this whole term other than the variable. I will get it here. Here this factor is z square. This one ez over a square, because one term will be ez, but ez will come outside the w integral, so I can just place it here. And I have done its integration. Then I put the limits. E infinity goes 0. Ez, you have this z divided by this term. Then you can do these cancellations. And you will get fz as follows. All right, this up till this term. Then in these two terms I take z common, I will get this. LCM with n naught, this there will be n naught here. This will cancel. Then these two terms will cancel, and I will finally get the distribution of f of z as follows. After this, I just have to integrate this from 0 to infinity, because this is an error distribution. I just integrate from 0 to infinity. Again, this will be giving me from
first of all, its integration will be this thing. This goes out -1 over n naught goes here. So then you put the limits, will be 0, -1, and -1 becomes plus. Hence you have found the error probability as n naught over a square plus n naught. So I take n naught here in the denominator. This becomes like this. This becomes like this. So this is the probability of error. Again, these steps were all missing in the book. So I have done all these steps. So now the error probability has been driven as shown in my notes. So next thing is सर ये जितनी भी मैथमेटिकल आपने डिटेल बताई है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिलेबस मतलब सिलेबस का हिस्सा है भाई, पे मैं नोट्स में क्यों इतनी मेहनत करूंगा? क्या हो गया, आप कैसी बातें कह रहे हैं? सर फिर इतनी देर से गो थ्रू आप करवा रहे हैं तो आप करें ना, ये आपने पिछले से लर्न करना था ना। आपने खुद तो कहा आपको एक और मेथड भी पता है इसका। अब यहाँ पे वायरलेस पे स्टोकैस्टिक या प्रोबेबिलिटी तो नहीं पढ़ाएंगे ना, हमने तो आपको बताना है भाई। मैंने आपको स्टेप भी, वरना मैं कहता आप खुद से करके आए, ये मेरा काम थोड़ी मैं एक स्टेप करके दिखाऊं। सर आप मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे से करना है। तो ये तो जाहिर है मैं शॉर्ट मैं फिर भी 23 मिनट लगा दिए इस पे, 1:23 हो गया और आप लोग आए भी लेट थे। So you don't have to slow me down. The notes are there. This is a master's level course. You have studied all the things. And actually you could have gone through them yourselves. I didn't have to explain all the steps. All right, let us go further. First of all, this is very important concept. We will be defining signal to noise ratio. All right, so it is actually the ratio of the signal power to the noise power. All right, the general definition, but we will be defining it as signal energy, average signal energy per complex time. You know, per complex time means it is power, and you know, noise energy per complex time. This is noise power, and this is energy power, or you can say energy per time, or energy per time of signal and noise. Hence you will be getting the ratio of signal to noise ratio. Now if I ask you what is the signal to noise ratio for this orthogonal scheme, now you know in the orthogonal scheme we had noise and not, and we have signal. In the signal, you know, always whether you send XA or you send XB, okay, one symbol will be A but the other symbol will be 0. All right, so you could see that the average energy that you are sending is actually first of all, what is the power? Power will be A square, but in the second slot the power will be 0 square, it will be 0. So let us say in 1000 times you will be sending 500 times A square, but 500 times you will not be sending A square. So your average energy will be actually 500 A square divided by 1000, since you will be getting A square over 2. Your average symbol energy is A square over 2. Now what is the noise energy? So noise energy, again it has to be calculated in you know, complex. Okay, here this was also in complex, but here if you could understand, we were just sending the signals in the real axis, in the in-phase quadrature. There was no signal part in the jth domain or in the quadrature or in the q phase. All right, that is why we were just sending A, all right, in the real phase. But noise, you know, it exists both in the quadrature and in the in-phase component. So the noise is n0 by 2, n0 by 2 is total is n0, as you have seen previously. So noise will be n0. So total signal to noise ratio will be A square over 2 n0. All right. So if I replace A square n0 as equal to 2 SNR, so my probability of error will come out to be, you can see 2 plus 2 SNR, and you can take this 2 outside, this becomes to the power -1. So hence you can write this as 1 over 2, 1 plus SNR. So probability of error is 1 over 2 times 1 plus SNR. This is a very, very important factor, and that is to drive the probability of error for your communication system. Here you can say, if I say that probability of error is 1 over 1000, 1 over 1000,
This means that roughly speaking, your SNR, you know, this multiply by 2, multiply by 2 to here, this will become 500. So 1 plus SNR is approximately 500. In other words, SNR is approximately 500. Or in other words, you know, if you take its 10 log, this will come to 27 dB. So for getting this amount of error, you need to spend 27 dB, which is a large or stupendous amounts of power is required. So this is the total analysis of our orthogonal modulation. सर 1 plus SNR कैसे आया ये बता देना। तो इसलिए आया कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर था 2 plus a square n naught आया था जी। तो a square n naught किसके बराबर 2 SNR के बराबर है। 2 SNR यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 2 को कॉमन निकाल लें, 2 minus 1 है वो भी बना हुआ SNR रह गया अंदर तो यहाँ, ठीक है। Now let us go further. Now we try to understand coherent detection. हाँ जी क्या पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो आपने बताई ऑर्थोगोनल सिग्नल प्रोसेसिंग, यानी कि ये वाली जो है ये इसको हम ऑर्थोगोनल टाइम पे डिपेंडेंट है, ये वाली हम कह रहे हैं ना ये टाइम पे डिपेंडेंट है। जी ऑर्थोगोनल सिग्नल प्रोसेसिंग हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऑर्थोगोनल मॉड्यूलेशन स्कीम थी हमारी। ऑर्थोगोनल टाइम डिपेंडेंट है या टाइम फ्रीक्वेंसी? डिपेंडेंट तो हर चीज ही टाइम डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी का तो हमने अभी जिक्र ही नहीं किया। हमने इससे फ्रीक्वेंसी का तो है ही नहीं ना, वही टाइम। तो। हाँ जी हमने इसको बस बताया कि ऑर्थोगोनल इसलिए है क्योंकि ये टाइम में ऑर्थोगोनल है, क्योंकि एक सिंबल आप भेज रहे हैं A0 और दूसरा भेजेंगे आपने 0A, ठीक है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। एक होगा ना 5 वोल्ट और 0 वोल्ट होगा, दूसरा होगा 0 और 5 वोल्ट। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट 0। दैट इज व्हाई दे आर ऑर्थोगोनल। जी सही है। But still it is better than BPSK because you know it is giving us some result at least, but that was totally failing. Now we go to the other method and that is coherent detection. Remember what is the difference between coherent and non-coherent? सर जो कोहेरेंट होता है उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। नहीं यार फायदा क्या हो गया, मैंने कहा था कोहेरेंट इज दैट इन विच यू नो h, you know the channel coefficient, but in non-coherent you do not know what is h. So in the previous scheme if you could see we hadn't assumed that we knew h. We say alright we do not know h and we found the likelihood ratio and all those probabilities and then the probability of error was found. We never assumed that we knew h, but in coherent direction we always know what is the channel through which the signal has passed. So you know channel is a Cn, complex Gaussian random variable, so that the value of that channel coefficient is known. That is called coherent detection. Now before we go into its detail, okay, first of all let us try to understand our performance in an AWGN channel. So what is an AWGN channel? Additive wide Gaussian noise, in which there is no channel effect multiplicatively, which means output is just the input plus additive noise. There is no h here, all right, which results because of you know multipaths and you know scattering, reflection and all that. Let us say it is just a simple AWGN channel. Many transmission lines have this type of channel where you just have a signal added with a noise. So first of all I try to find the probability of error for this channel. एक्सक्यूज मी सर। सर एक अजीब सा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ बोले। सर ये जब चैनल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक पाथ है? चैनल का मतलब जाहिर है कि जी चैनल का मतलब होता है कोई रास्ता जिससे आप so that you can go from the transmitter to the receiver. So in communications in generally we have actually three different models of communication. All right. Yes, the first model is called the AWGN channel. Okay. Yes, sir. This is the channel, the additive noise channel, in which the signal plus noise gives us the received signal. The second model is a linear filter channel, which is mostly used for transmission lines. And in that case, you have the signal convolved with the impulse response plus noise.
The third is the most difficult, which we are studying in this course, which is for wireless and acoustic channels, which are via, which are non-guided, non-wired lines or wireless channels. In that case, the channel model is the signal convolved with the impulses, which is a time varying impulse response plus noise. All right. And we saw, let us say that if the impulse response is something in the last chapter we saw, the received signal will be actually the amplitude versus this, and in this case we have seen the previous signals that because of some of all of these signals coming from various directions and their phases are different, you can model this as a flat fading or a frequency selective fading channel, where you have H here, H into X plus noise, that will be flat, or convolve of H with X, that will come out to be frequency selective. That is all been studied in the last chapter. Okay? Okay. Okay. Let's go further. Now what we want? We want to find the probability of error for a AWGN channel. No H here, no frequency flat, no frequency selective, no frequency flat fading channel. All right, simple AWGN channel. I want to find its probability of error for BPSK. Now, those students who might have studied this in their previous course, if they have studied from UT or any of its subsequent campus, they will realize the probability of error is given as follows. All right. But I will also revise this concept from the appendix. अगर आप सबको ये आता है तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं है. हाँ जी, सारों को आता है probability of error कैसे निकलता है? वो क्या है जो तीसरे बंदे हैं आपके, उनसे तो पूछें. सर वो आज फिलहाल अभी आ गए. MS नहीं है वो, मोहम्मद साद. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी मोहम्मद साद. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप कहाँ रह गए थे इतनी देर से क्यों आते हैं आप? नेट चल नहीं, कोई बात नहीं. अरे साथ ये आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ अ बीपीएस के मॉड्यूलेशन स्कीम फॉर एडब्ल्यूजीएन चैनल? सर क्यू फंक्शन पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा सर. अच्छा चलें ठीक है. सर आपने एक टर्म बोली भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव. हाँ जी, वो क्या चीज है? शाबाश. चैप्टर पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल एंड फ्लैट फेडिंग चैनल. दो चैनल्स थे ना. जी जी. तो जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होता है उसमें आप H के साथ कन्वॉल्व करते हैं X को, और फ्लैट फेडिंग में H को सादा मल्टीप्लाई करते हैं X के साथ. बस एक H होता है, वहाँ बहुत से H होते हैं और पूरी उसमें आपको टैप लगाना पड़ता है. टैप के लिए लाइन होती है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव में. सर और फ्लैट में तो बस सादा मल्टीप्लाई. सर वन टैप को हम फ्लैट फेडिंग कहते हैं और वन टैप से अगर ज्यादा हो तो वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव हो जाता है. हाँ ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सर, ये भी कह सकते हैं. ठीक है. अच्छा, let us go further now. So we need to know its proof. ठीक है. For this, first of all, we will go to the appendix. But again, I found there are errors in the appendix. ठीक है. So I will be referring to my notes wherever there is, the steps have been jumped upon or there is error in the book. So we will be going to appendix A, the same appendix where I showed you, the Gaussian vector in Gaussian noise. So we have just, a AWGN channel. Let us say that either UA is transmitted or UB is transmitted. U could be equal to U and UB, and W is again, additive wide Gaussian noise. So we are assuming that we are just sending the signal along the real axis. There is no complex part. So no noise will be, it will be not C, it will be just N, and 0 N naught by 2, because we are just talking about real domain. Now we want to detect, or we want to decide whether UA was transmitted or whether UB was transmitted based on our observation of W. All right. So what is the optimal detector? The optimal detector says that if the probability of getting UA given that Y is received is greater than the probability of getting UB provided Y was sent, then in this means that U is sent. Vice versa, if UB is greater, then this will mean that UB is sent. All right. Probability of getting a U provided Y is sent. All right. Now,
But we cannot not find this probability. We do not have the mathematics to find this probability. So what we do, we apply the famous Bayes rule and convert this probability into the famous maximum likelihood receiver that we have just seen in the last lectures. All right. Again, the steps have been missing of the applying the famous Bayes rule, but I will just help you. अच्छा शायद मेरे पास नोट्स में भी हो तो शायद उससे आपको और आसानी हो जाए. So this is the Bayes rule. BA given B, probability of B is equal to B probability of B given A probability of A. हाँ ये सारों को आता है Bayes rule या नहीं आता? Yes sir. Yes sir. ठीक हो गया ना? So if I say PB and PA are equal, so they both cancel. I can write PA given B is equal to PB given A. So at this time I am trying to find probability of UA given Y can be written as probability of Y given UA. All right. So the same can be written as Y given UA. And the same can be written as Y given UB. पहले उल्टा था, UA given Y था और UB given, अब हमने उसको उल्टा कर दिया by the help of the famous Bayes rule. All right. फिर ये स्टेप सारे खा गया, सारे स्टेप का मुझे सारा आपको दिखाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम सारा कर लेते हैं. So all these things will be shared, no, don't worry. All right, so we have to find the probability that if Y given UA is greater than Y given UB, I will say that UA was sent. Vice versa, I will say that UB was sent. All right. Now, what is the probability of Y given UA? All right. ये किसमें बताया हुआ यहाँ पे? अच्छा, ये इसने जो है ना पूरा फॉर्मूला लिख दिया. All right. Well, first you will use the book as much as possible, then we will go to the notes. All right. So now what is Y? Y given UA. All right. What is Y? We know that Y is equal to U plus W. All right. What is W? W is additive white Gaussian noise. This thing. And what is U? U is either UA or UB, or whatever you can put. Let us say AB है, जो भी आपकी values ही होंगी ना UA UB की. Let us say UA UB. All right. So what I am doing, I have a Gaussian random variable, and in that I am just adding a scalar. So what happens if you add a scalar to a Gaussian random variable? The mean is shifted. The mean will be UA UB or UA or UB plus mean of 0, which is 0, so UA or UB. And the variance will remain the same of the noise, and not 2. So Y will be this Gaussian random variable provided given is provided. You can see in the notes here. So we want to write this thing. If U is given, I will have variance will be again n naught by 2, but the the Y random variable will be UA. The mean will go from 0 to UA, while the variance will remain n naught by 2. So if so here you can see here. थोड़ा सा ना बस ऊपर नीचे इसको मैं आपको बता दूं कैसे हो. So what you will do, you will write the distribution of YA given UB, and you will write the distribution of Y given UB and Y given UA. Right? So you can see Y given UA will be this thing. ठीक है, जो इसने स्टेप मिस किया है ना वो ये वाला स्टेप है कि आपने बस अब ये लिखना है. इसके बाद आप Y given UA लिखें और Y given UB लिख दें, जैसे इसने यहाँ लिखा है. ये होगा ना Y given UA. जब Y given UA होगा तो मीन आपका UA पे है, और Y आपका क्या हो गया, Y का मीन UA. तो Y माइनस मीन Y माइनस UA, वेरियंस क्या होता है 2 इंटू n नॉट बाई 2, 2 कट गया, n नॉट रह गया. यहाँ पे क्या होगा 2 पाई वेरियंस n नॉट बाई 2, 2 कट गया, ये रह गया. दिस इज Y given UA. ठीक है.
And what is this thing? This is y given ub. सर UA UB XAX भी है जो कि ट्रांसमिटेड सिग्नल थे। UA UB XA नहीं, अभी XA आप क्यों मिला रहे हैं? UA UB UA UB है, आपने भेजा ना y इज इक्वल टू UA प्लस y इज इक्वल टू U प्लस W, तो U आपका UA भी हो सकता है, U आपका UB भी हो सकता है सर, यानी ट्रांसमिटेड सिग्नल है ये U। कौन? हाँ, U आपको ट्रांसमिट है ना, ट्रांसमिट था और प्लस नॉइस थी, तो फिर आपको रिसीव में y। सर हमने तो लास्ट टाइम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R/SM पढ़ी थी, तो उसमें जो R था वो तो रिसीव्ड सिग्नल नहीं था, इधर ट्रांसमिटेड सिग्नल ऊपर है न्यूमिनेटर में। सर जो लास्ट में हमने लाइक्लीहुड पढ़ा था फंक्शन, जिसमें हमने P ऑफ R/SA थी, SM थी, कि ऊपर रिसीव्ड सिग्नल होगा, नीचे ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा, गिवन दैट सॉरी रिसीव्ड सिग्नल गिवन दैट ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो इसमें भी जो UA वो रिसीव्ड सिग्नल है और गिवन दैट Y ट्रांसमिटेड सिग्नल है। नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, वो तो था ऑर्थोगोनल मॉड्यूलेशन थी, और वहाँ पे आपके पास एक फ्लैट फेडिंग चैनल था, वो डिफरेंट सारी, वहाँ आपने वहाँ भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड लगाया था, दो डिस्ट्रीब्यूशंस को आपने कंपेयर किया था, मगर वो बहुत डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस थी सर। उसमें गिवन बिल्कुल जी सर, आपने वो आपकी दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस थी। हाँ, लाइक्लीहुड फॉर्मूला सेम था उसका कि y गिवन दिस y गिवन, मगर यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है सर। बट लाइक्लीहुड में गिवन दैट में तो हमने ट्रांसमिटेड सिग्नल x से रखा था ना, वहाँ पे पूरा वेक्टर था भाई, थोड़ा फर्क करें यार, थोड़ा सा ख्याल करें। और वहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पूरी वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो आप स्टोकेस्टिक वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तो एक सादा सा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसको आपने कंपेयर किया, उसके बाद काफ़ी कैलकुलेशन के बाद आपने कोवेरियंस मैट्रिक्स डाला, करने के बाद जाके आप लाइक्लीहुड पे पहुंचे। यहाँ तो हम कुछ कह नहीं रहे, यहाँ तो हम कह रहे हैं भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन y गिवन u है, ये होगी। y क्या है? y एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन, एक सिंपल एक रैंडम वेरिएबल है, कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं, वहां तो कॉम्प्लेक्स भी था, वेक्टर भी था, ऊपर से चैनल भी था, तो इतना कुछ था, तो उसको उससे कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप? हाँ, मैक्सिमम लाइक्लीहुड दोनों जगह सेम था, मगर कैलकुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों को कंपेयर ना करें। सर फिर ये 2 किधर, हम 2 खत्म, यानी 1 बाय हाँ, ये 2 अल्लाह के मतलब 2 पाई सिग्मा स्क्वायर होता है ना, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह n नॉट बाय 2 आ गया, तो 2 कट गया, तो पाई n नॉट रह गया। ओके सर, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो ये दिस इज y गिवन ua, दिस टोटल, एंड दिस इज y गिवन ub। If this is greater than u, we will decide ua. If this is greater, we will say ub was sent. All right. So we are assuming that ua is sent. All right. So this has to be greater in if you want to have no error. All right. Now, if I compare these two, you know, this cancels. Exponential cancels. This n naught will then cancel. We will just have this minus will cancel and the sign will alter. And you will just have y minus ua mod square less than or equal to y minus ub square. Then square can cancel. So we can just see y minus ua mod is less than y minus ub mod. So we will decide that xa was sent if the distance between the received symbol and ua is less than the distance between the received symbol or the received signal value and ub. And this is also illustrated in this figure, but again this figure is totally wrong. This should have been ua and this should have been ub, so there is error in this figure. So you can always see my notes. I have corrected whatever there is wrong or steps are missing. This is the right figure. ua is here and ub is here. All right, there are two distributions. So if some point lies here, then in that case it will be more closer to ua instead of ub. I will say that ua was sent. If some point lies here, then I will say the receive symbol is here, then I will say that ub was sent, because the distance of the receive symbol with ub is small as compared
as compared to the distance between this symbol and UA. सर ये बुक वाला गलत कैसे है? UA क्यों उधर होना चाहिए? क्योंकि इसने गलती की है ना, UA ग्रेटर है ना हमारे यहाँ। सर वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो तो कर्व्स तो बता रही हैं कि किस पॉइंट पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नीचे वाला जो लाइन है वो तो सिर्फ उसकी वैल्यू बता रही है कि इस वैल्यू पे होगी बड़ी। तो यहाँ पे अगर हम UA आगे भी रख लें, तो अगर कर्व के हम इस पॉइंट पे खड़े हैं जो UB वाली कर्व से छोटा है, तो फिर हमारा UB ही बड़ा हुआ ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई ना। ये भी वो राइट ये इसलिए गलत है कि इसने ना अपनी मैथ से सही से कोरिलेट नहीं कर रहा ना उसको। मैथ में उसने UA को यहाँ रखा है, UB को यहाँ रखा है। वो कह रहा है मैथ में कि अगर आप इससे बड़ा होगा तो आपको UA आना चाहिए, जबकि ग्राफ में तो वो कह रहा है इससे छोटा होगा तो UA आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। या तो वो डिफाइन सही करता है ना, उसने वहां उल्टा डिफाइन किया, डायग्राम उल्टी बनाई, मैं क्या करूं? अभी आप देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। Alright, so this is Okay. after this Okay, point sir. there is no problem. Okay, problem starts if he says, then what is the probability of making an error? He says the probability of making an error is if y is less than this, y is less than UA plus UB provided UA was sent. But in the diagram, the problem is that if it is less, you are in UA because UA is less than UAB. So if it is less, then you are UA. This is correct. But he says that probability of error, that y is less given UA is probability of error. This is probability. This is wrong. Either this is wrong or the graph is wrong. Actually, the graph is wrong and this is right. So only the graph needs to be altered, as I have shown in my notes. That probability of error, yes, there will be error if the point lies below the middle point of UA plus UB divided by 2, and I say UA was sent, but the point is here, then yes, this is probability of error. That y is less than this, provided the UA was sent, then this will be probability of error. सर ये रिपीट कर दें, समझ नहीं आई ये चीज़, ग्राफ से देख के ये इक्वेशन जरा रिपीट कर दें। असल में दो बंदों ने सवाल पूछ लिया ना, इसलिए घपला हो गया सारा। खैर मैं तो अपनी तो समझा रहा था, उनका सवाल पहले आ गया था। तो देखिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड द फेमस रूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फेमस नियरेस्ट नेबरहुड रूल। नियरेस्ट, इसको नेबरिंग लिखा हुआ है, ऐसे इसका रूल का नाम है नियरेस्ट नेबर, कैसे लिखा है छोड़ना। दिस इज आल्सो कॉल्ड द नियरेस्ट नेबरहुड रूल। वी विल डिसाइड ऑन द रैंडम वेरिएबल which is closer to the receive symbol. So if the y is closest to UA, you will say UA was sent. Okay? This rule comes from the maximum likelihood. Maximum likelihood comes from the optimal detection. So everything is well defined. Now we go further and then what is the probability of error? The probability of error will be that I have sent UA. I have sent UA. But y minus UB comes out to be less than y minus UA. This is the probability of error. I have sent UA, but the point is somewhere here before UA plus UB over 2. Because if it is somewhere here, then the distance between UB and that point will be less as compared to the distance between this point and UA. This is the nearest neighborhood rule. So I will write it as follows, that probability of error will be if y is less than this or y is in the space of UB, provided that UA was sent. So in that case, y minus UB will be less than y minus UA. But it is wrong. It should be the other way. But yes, this is the probability of error. सर मीन्स हमें ग्रेटर देन रिप्लेस कर देना चाहिए। ये सही है भाई, इधर कहाँ कर देंगे, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यहाँ कोई गलती नहीं है। डायग्राम गलत है, जो मैंने नई डायग्राम बता दिया आपको। अब और क्या मसला आपको? सर बुक की डायग्राम सही है, इसको मत कर, हाँ ये सही, इसको मत गलत कीजिएगा, ये सारा ठीक लिखा हुआ है। बुक की डायग्राम गलत है जो मैंने आपको समझा दी। ऊपर वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलती है? ये तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड रूल लिखा है ना कि भाई यूए कब डिसाइड होगा, जब ये छोटा होगा, और वो चेक भी हो गया इससे। आप इसको सॉल्व करके ये निकालेंगे तो यही निकलेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी ना जी। और इसमें हमने यही कहा था कि चूज यूए को चूज। एक मिनट यार, पहले उनका तो करने थे ना, सबर तो करें शेरा साहब, पहले उनका मसला हल करने।
अरे सलीम साहब ये समझ आ रहा है आपको? यस सर, जी एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएंगे और रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगी। ये आ जाएगा। तो फिर यूए को चूज करने के लिए किया था, तो यूए को चूज करेंगे जब ये चीज तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, यस ये सर। भी सही लिखी हुई है, बस जी डायग्राम सर। गलत है। सर ठीक मैं है, कह रहा आपको था समझ कि आ गया सर? अच्छा हाँ, क्या? सर आपने कहा था कि बुक की जो डायग्राम है वो गलत है। मैं कह रहा था कि अगर हम लेस देन को ग्रेटर देन कर दें तब बुक के अकॉर्डिंग मैथ्स आ बुक जाएगी। का गलत है, अब आप छोड़ दें, बुक का इस वक्त गलत है, उसको आप ना करें ग्रेटर देन लेस देन, ये बिल्कुल सही है। बुक की बस डायग्राम गलत है, ठीक है, ठीक है सर। बाकी ये सारा ठीक है, सही है। बुक में जो यस। करना था उसने ये इस इक्वेशन के लिहाज से वो गलत है, या इक्वेशन को वो ठीक करता, बाकी ये सारा ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। सर वैसे एक्सपोनेंशियल को जब खत्म करेंगे तो ग्रेटर देन जोन सा वो लेस देन किस तरह की समझ नहीं आई। वो एक्सपोनेंशियल से थोड़ी होगा भाई, नहीं मतलब कि सर जो रिजल्टिंग। माइनस से होगा, माइनस से, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये सर लेकिन मुंह इसका इस तरफ निकल जाएगा। जी सर माइनस तो इक्वली खत्म नहीं हो रहा, हम हाँ दोनों तो साइड। मगर आपको आपने पढ़ा नहीं है उसका रूल, जब आप माइनस से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन साइन चेंज हो जाता है। ओके सर, जी जी समझ आ गई सर, ठीक है। हाँ जी, अब आप शिराजा, आपका क्या मसला हो रहा है? सर ठीक है, मेरा क्लियर हो गया आपकी डिस्कशन से। भाई बुक में 1000 गलतियां हैं, बुक को रखें, सर पे सवार करें, मगर इतना सवार ना करें कि गलत को सही कर दें, ठीक है? ऑलराइट, so y is less than ua plus ub over 2. This is all right if I want to find the probability of error, but again now he has made a jump. Again many steps are missing, so I will be going to my notes. Alright, so we are here, no problem. Probability of error will be y is less than the mean value provided the ua was sent. Then this will be definitely probability of error. So how can I find the probability of error? So I will say provided ua was sent, then I have this distribution. This is a distribution if ua was sent, I will this distribution. Well, this is a distribution when ub was sent, because you know this is a Gaussian random variable, just it shifts to ua mean if ua is sent. If ub is sent, again a Gaussian distribution, it just shifts to ub provided ub was sent. So I have this distribution given ua, this means I will be focusing on my distribution here. Now when this distribution will be less than ua plus ub, this part will be less than ua plus ub, then this is the probability of error. All of these probability will give me probability of correction, but this part, there is a chance that the random variable comes out to be less than this point, which is given by this distribution. So I will just integrate on this part to find the probability of error. So this part will be starting from minus infinity up till ua plus ub over 2 for this distribution, for the ua distribution, y given ua distribution. All right. Now I know what is a y given ua distribution. I will just put it here. This was my y given ua distribution. You know, 2 will cancel and this 2 will cancel. I will just integrate from infinity to this thing, and the mean is, you know, y minus this. The mean is now at ua. So how will I integrate this? Again, many steps are missing in the book, so I will be doing all those steps. So first of all, you have to apply, you know, shift. So I say, substitution. I say x is equal to y minus ua over under root n naught 2. 2 is also in the under root sign. This is my x. I change my variables now here. So if x is there, then what is d of x? So d of x, you know, this will go 0. D of y divided by under root n naught over 2. All right. So I will change my dy by dx into under root n over 2. All right. And otherwise, I will change my x minus ua over under root n naught over 2 by x, because you know this was actually y minus ua square. So I can put this under root, this n as under root n naught. This will also come inside the square. All right. So this will be equal to you know, x square, and you know this 2 will also come here. This will be under root 2, and square of this will be actually 2x square. All right. So I will just write this as e minus x square over 2. So you can see, because you know you can just take this 2 out. This will be just y minus ua over under root n naught, or I can write this as y minus ua whole square over under root n naught.
all right, and that will be equal to x square, and this this under root 2 is here, but this under root 2 is not there, all right, it is not present here, all right. So this thing is actually coming out to be it is coming out to be x square over 2, all right. That is why I will just replace this by x square over 2. Because you are replacing x by this factor, or in other words you can say that ये under root 2 आपका ऊपर चला गया, फिर under 2 यहाँ पे आ गया, तो you are replacing x over under root 2 by y minus ua over under root n naught. But here you have y minus ua whole square under root n naught. So whole square will be equal to x square over, instead of under root 2, this will become x square over 2. So you will just write e minus x square over 2 after substitution. This will be dy will be dx over n over under root 2. This is again the same. This thing will come here. Now what will happen to the limits that need to be calculated? So we were integrating dy from minus infinity to ua plus ub. So if I put y as minus infinity, x will also remain minus infinity. So the lower limit will remain the same. But what will happen to the upper limit? Now upper limit, you are going from into ua plus ub over 2. Hello. वालेकुम सलाम. हाँ जी, मैं इरफान साहब बोल रहा हूँ. मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा हूँ मास्टर जी. हेलो, मैं बता रहा हूँ मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ इस वक्त. आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर लें. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Sorry for the interruption. All right. So now the above random variable, y was going from infinity to this point. Now what is x? So put y ua plus ub over 2 here. When you will be putting this, ua plus ub minus ua, so ua will subtract this. This will come out to be ub minus ua over 2. So your limits will go to ub minus ua over 2. All right, and then again you also have these things, under root and not over 2, that will also be there. So we have after substitution, your integral comes out to be something like this. So it comes out to be something like this, as I've driven. This is already cancelled and it is like this. So we have tried to make it in some standard form. Now I change another random variable and I say that my x is equal to minus x dash, or dx is equal to minus dx dash. No problem, this will just become x dash square. This will become minus dx dash, like this. And then I can change the limits, lower, upper, lower. So this minus will go away and this will come out to be something like this. Now this is in the standard form. This is the CDF, the cumulative distribution function. This is the cumulative distribution function of a standard Gaussian random variable of 0 mean and 1 variance. Okay, and you are trying to find the area under the curve from this point to infinity. So this is the famous Q function. All right. So this is given the Q function times the lower limit where the integral starts. Q times
this thing, right? Q times the this thing will come here. So then now let us say what is my UA and my UB. Now we come to our book. We are using BPSK. So in BPSK, let us say UA is plus A and UB is minus A. So this difference will come out to be 2A. I will just put 2A here. And this is 2A and this is 2 under root n naught, 2 cancels. It comes out to be A over under root n naught over 2. I can make this radical sign greater. So this will come out to be A square over n naught over 2. 2 will go in the numerator. So it will come out to be 2A square over n naught. Now for BPSK, what is the signal energy? You know, in BPSK, I can send either plus A or minus A. So every time the energy is A square, average energy will be A square. And noise, you already know, is n naught. So SNR will be just A square over n naught. Hence, Q will come out to be 2 SNR. All right. So So this has, I have proven this, that probability of error for BPSK is Q into under root 2 SNR. Haj, if you have any question, you can ask before we go forward. No, sir. Okay. Now, this is the probability of error has been found. So that you all know, and that. What is the Q function? All right. We know this function. It exponentially decays exponentially with x square. Or in other words, we can say that Q of x is less than E minus x square over 2. All right. And for x greater than 0, but for x greater than 1, Q of x is greater than this factor. All right. So this is just we are just bounding our Q of x. Again, I know what is Q of x is just like CDF. All right. It is just summing the Gaussian distribution. All right. From some point to some other point, as we have seen in the the notes. This thing, it is just summing up the Gaussian distribution from some point to this point, and you can just represent this sum with this Q function. All right, but we also have bounds or bonds defined on this Q function. All right, and the bounds are there that Q of x for x greater than 0 is always less than this, but Q of x for x greater than 1 is always greater than this. So you are actually bounding your Q of x by these two asymptotic curves. आदि की समझ आ रहा है आपको? सर ये derived equation, derived results हैं. Derived results हैं. Derived results ही हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल derived results हैं. क्योंकि अब इनमें तो वैसे इसका पीछे लॉजिकल सेंस भी है. तो थोड़ा सा अगर हम Q of x को थोड़ा सा मतलब करके सॉल्व, Q of x इंटीग्रेशन ही है ना. सर आपके नोट्स में हैं तो कर लेंगे. मतलब इसके पीछे जो कैलकुलेशन है, डिटेल मैथमेटिक्स है, वो नोट्स में प्रोवाइड. मैंने नहीं की, चूंकि क्यू फंक्शन तो हम पढ़ाते हैं. वैसे अगर आपको देखना है तो क्यू फंक्शन की डिटेल जो है वो हमारी वही प्रोकेस वाली बुक में दिया हुआ है क्यू फंक्शन के बारे में.
क्योंकि क्यू फंक्शन तो आपको बेसिक से आता है ना, ये तो जब प्रोबेबिलिटी फैक्टर आप निकालते हैं किसी भी सिंपल डिजिटल स्कीम के लिए, तो उसके आपको क्यू फंक्शन में AWG तो आप पढ़ाते हैं ना लास्ट कोर्स में, तो वहाँ पे तो क्यू ऑफ एक्स आपको करवाया होता है। तो ये तो वैसे मतलब वहाँ क्यू ऑफ एक्स तो हम पढ़ाते हैं, मगर ये बाउंड्स नहीं बताते कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से बाउंडेड है। सर क्यू इटसेल्फ है क्या चीज़, ये क्यू पैरामीटर? अच्छा, मैंने कहा था ना क्यू ऑफ एक्स एक अभी तो बताया था आपको, ये एक CDF की तरह है, मगर CDF का उल्टा है। आपको पता है ना CDF क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। वो होता है ना कि जी -∞ से x तक आप इंटीग्रेट कर दें स्मॉल f ऑफ x को, या PDF को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, CDF आएगा। अगर आप 1 - CDF करें तो वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री CDF आ जाएगा। और उस कॉम्प्लीमेंट्री CDF को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप उसको क्यू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वैसे ना इसमें, अगर आप ये देखें, वो अच्छा यहाँ तो पूरा दिया हुआ है उसने। ये देखें यहाँ पे, ये मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये तो हम थोड़ा बहुत पढ़ा होता है हमने, पर अगर आप चाहते हैं बॉन्ड से, देखिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये इसने पहले क्यू को समझाया, ये तो उसने क्वेश्चन पे से बताया कि क्यू क्या होता है। क्यू इसने तक शक्ल ही बनाई हुई है, ये क्यू फंक्शन की वैल्यूज होती है। 0 से आप लेके जाएंगे एक्स तक, तो जाहिर है 0 तक तो 0.5 होगा, क्योंकि आपने जब इंटीग्रेट करना है -0 तक तो 0.5 आएगा ना। अगर एरिया कर्व पूरी 1 होती है फॉर द स्टैंडर्ड एंड, तो 0 तक आपके पास 0.5 आएगा, तो 1 - 0.5 से स्टार्ट होगा। और CDF तो एक्चुअली बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जाके 1 हो जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो 1 - होता है वो कम होता जाएगा, यहाँ तक तकरीबन वो 0 को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे जाकर। तो ये इसका क्यू ऑफ एक्स है। और क्यू ऑफ एक्स को चूँकि 2 तरह की कर्व्स हैं, एक ये तकरीबन थोड़ा सा आप कह लें कि स्क्वायर एक्सपोनेंशियल है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिके है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पीछे चला गया, कि आप इसको इस तरह से बाउंड कर सकते हैं। The tail decays exponentially fast as evident by the following upper and lower bounds। कि QA को आप इस तरह से बाउंड कर सकते हैं कि वो ग्रेटर देन दिस होगा, मगर QA जो है वो लेस देन दिस होगा, प्रोवाइडेड A इज ग्रेटर। A इज ग्रेटर का मतलब ये कि आपका जो A है, आप वो यहाँ पे खड़े हुए, अगर यहाँ पे आप खड़े हुए हैं तो जो आपका ये Q फंक्शन की जो कर्व है, इसको आप बाउंड कर सकते हैं इन दो बाउंड्स के दरमियान, इन दो अपर और लोअर बाउंड्स के दरमियान। ठीक है, ये इसका हो गया। और अगर A लेस देन 0 तो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो वो आप जैसे इसने बुक में मेंशन कर दिया है। ग्रेटर देन 0 तो वो इससे बाउंडेड है, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्यू ऑफ एक्स, तो एक्चुअली ग्रेटर देन 1 के लिए ये दोनों ट्रू होते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 1 के लिए क्यू इससे ग्रेटर होता है, मगर लेस इससे होता है, जैसे हमने वहाँ देखा। मगर ये थोड़ा डिटेल बता रहा है कि भाई एक्चुअली ग्रेटर देन 0 के लिए वो इससे बाउंड होना शुरू हो जाता है। तो ये बाउंड है जो मैथमेटिशियंस हमें बाउंड देते हैं, हम उन बाउंड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक है। नाउ so I say that my q of x is bounded by this, and maybe in the next lecture, because long short of time, I can also give you some values also, तो ताकि आपको समझ आ जाएगा वो कैसे बाउंड हो रहा है। बगैर बाद में दिखा देंगे। Now let us go further. Now detection error probability decays exponentially in SNR in the AWGN channel. Very good. You can see here that as your x is increasing, all right, or even you can say that as your x is greater than 0, all right, so your q of x is bounded
by an exponential decay. Decays exponentially in SNR in the AWGN channel. All right. So because you could see here that your x is actually, you know, under root 2 SNR. All right. So if I put the x as equal to under root 2 SNR, then this will come out to be e minus under root SNR whole square. This will come out to be 2 SNR over 2 cancels. It will come out to be e minus SNR. All right. So that is why I can say that my probability of error is bounded by an exponential in SNR. Or you can say decays exponentially in SNR. As, what is the meaning? That as your SNR will be greater, your error will be E minus SNR. E will be an error, Q of X will be less than E minus SNR. So as your SNR is greater, your error is being bounded by E minus SNR. So if SNR is greater, E minus SNR will be more and more small. So error will be bounded by a more and more smaller number. Okay. So you can see in AWGN the error is really reduces to a very large value because of this exponential decay and exponential SNR decay. But as compared to our orthogonal modulation, your error was being decayed by 1 over SNR. This is not much of a large decay as compared to the decay here, where there is an exponential decay. आगे समझ आ रहा है सारों को? ये मैं इसको येलो भी कहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था. आगे सबको समझ आ गया? यस सर, यस सर. तो मतलब हमने x को रिप्लेस कर देना है स्क्वायर रूट 2 SNR से और रिजल्ट सीखने दोनों में बाउंड्स में. हाँ ऐसे कह लें. बिल्कुल सर, आप ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. ठीक है ना. ये जो x वही है ना, इसका यहाँ पे x अंडर रूट है, तो ये इससे छोटा है. हाँ, और x ग्रेटर देन 1 के लिए ये इससे बड़ा है. ठीक है. ओवरऑल फिर भी देखें जो भी हो, इससे तो हर वक्त ही छोटा रहेगा ना. तो इन अदर शॉर्ट वर्ड्स, ओवरऑल वो एक्सपोनेंशियल से बाउंडेड है और ग्रेटर देन 1 की दोनों तरफ से बाउंडेड है. व्हाटएवर, वो इससे बाहर नहीं जा रहा. तो जाहिर इसका मतलब एरर तो बहुत बुरी तरह कम हो रहा है. You can also get us में. I can take some example. For example, जैसे हमने last time किया था. If I want the probability of error to be 10 to the power minus 3, this means Q of X comes out to be 10 to the power minus 3. I want this total probability of error to be 10 to the power minus 3. So what will be the value of this factor? All right. So actually तो वैसे तो इसका टेबल होता है. आप कहते हैं भी 10 to the power minus 3 है, तो ये जिसके x की वैल्यू वो आ जाएगी. फिर वहाँ से आप SNR निकाल लें. प्रॉपर तरीका ये होता है. ये आप सही है, ये भी तरीका ठीक है. मगर चूंकि हमने तो पहले एक बाउंड डिफाइन कर दिया है, वी कैन वेरी वेल डिफाइन आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एन SNR विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड. अभी तो हमने बताया आपको कि भाई Q ऑफ X बराबर है अंडर रूट कट गया स्क्वायर से, 2 कट गया E माइनस SNR के. ऑलराइट. तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैन रफली बी लेस देन E minus SNR. So if I want this to be 10 to the power minus 3, all right, 10 to the power minus 3, then I can very well calculate my SNR. तो आप दोनों साइड्स का log नेचुरल ले लें और फिर ये ये SNR इधर आ जाएगा, तो SNR इसका log नेचुरल के बराबर हो जाएगा. एंड मतलब you will be log natural and you will get that value. ठीक है. And you will see that that value comes out to be 7 dB. All right. This is one way. Another way, if you want to be very very exact, because the value is 10 to the power minus 3, so you can use this equation. All right. ऐसे मैंने एक और इक्वेशन से भी किया हुआ है. बहुत सी इक्वेशन से हो सकता है. चलिए ये हम बाद में कहेंगे. 2:15 हो गए. But this can be very easily shown that SNR for this 10 to the power minus 3 comes out to be 7 dB as compared to 7 dB in non-coherent modulation. Also, I will end the lecture here. Time is up. सर वो सेल फोन नंबर ना आपने कहा था कि हाँ, तो वो मैं क्लास में याद करूँ. हाँ जी, वो आप सब लिख लें 0321
4152871। मगर आपने सिर्फ 1 से लेके 3:30 तक कॉल कर सकते हैं आप, या 1 से लेके 3 तक बुध के दिन। बाकी अब हर दिन नहीं मैंने आपकी कॉल सुनी। और 1 से लेके 3 तक आप बिल्कुल 0321415287 या वो कह रहे थे कि जो ज़ाहिर है आजकल कोविड का चक्कर है तो जो ऑफिस आवर्स में आना मुश्किल है, तो ठीक है आप इस तरह से कॉल करें, फिर हम बेशक MS टीम पे हो सका तो MS टीम पे आ जाएंगे, नहीं तो आप कॉल पे तो होंगे। सर रिमेनिंग डेज में आप लैब के वायरलेस लैब के बता सकते हैं आवर्स क्या है?